गर्मियों का मौसम खत्म हो चुका है और बारिश के मौसम की शुरुआत हो रही है। ऐसे में जल जनित बीमारियों में भी इजाफा देखा जा रहा है। दरअसल जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, जल जनित बीमारियां बढ़ जाती है। उसी के तहत वडोदरा में भी जल जनित बीमारियों के केसों में इजाफा देखने मिल रहा है। वडोदरा शहर के कारेलीबाग इलाके में चेपी रोग अस्पताल मौजूद है, जहां पर 50 बेड की अस्पताल है, लेकिन वहां पर 40 से 45 लोग पीलिया और टाइफाइड की बीमारी से पीड़ित होकर एडमिट हुए हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। कारेलीबाग इलाके में टाइफाइड और पीलिया के केसों में सबसे ज्यादा इजाफा देखने मिल रहा है। वैसे वडोदरा महानगर पालिका प्रशासन सतर्क हो गया है और इस मामले में लोगों को भी अपना खास ध्यान रखने की अपील की जा रही है। દર વર્ષે જ્યારે આ વરસાદની સિઝનની શરૂઆત થાય એટલે પાણીજન્ય રોગો જે છે એમાં પ્રમાણમાં વધારો થાય, જેમાં મુખ્યત્વે કમળો અને ટાઇફોઇડ આવા પેશન્ટ જોવા મળે. ચાલુ વર્ષે પણ એ જ પ્રમાણે હાલ કમળાના કેસમાં અને ટાઇફોઇડના કેસીસમાં થોડો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આપણે ત્યાં 50 બેડની કેપેસિટી છે, એની સામે હાલ 40-42 પેશન્ટ એડમિટ છે અને ઓપીડીમાં રોજ 101 પેશન્ટ રિપોર્ટ થાય આપણે ત્યાં. અટકાવવા માટે હું એવું કહીશ કે મેઇન તો આ સિઝનમાં તમારા ઘરની આજુબાજુ કોઈ જગ્યાએ જો ખાડા ખાબોચિયા હોય, પાણી ભરાઈ રહ્યું હોય તો એનો નિકાલ કરાવવો જોઈએ. પાણીની લાઈન ખાસ કરીને કોઈ જગ્યાએ લીકેજ જણાય તો એને કોર્પોરેશનની મદદથી તાત્કાલિક રિપેર કરાવવી જોઈએ. અને બાકી જે બહાર ખુલ્લામાં ખાદ્ય પદાર્થો વેચાતા હોય છે, પાણીપુરી ને આ તે, એ ટાળવા જોઈએ. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।